Namaskar viewers, good evening. You are watching Sansad TV and this is House Highlights with me, Rajiv Kumar Singh. Let us start with the headlines. Parliament approves Budget 2023-24, both houses adjourn amid din. Chairman Dhankar expresses disappointment over continuous disruptions in Rajya Sabha, says 10 hours were allocated for the discussions on bills that could not take place. And Speaker rejects all adjournment motions in the Lok Sabha. Formal business takes place in lower house. Important papers laid on the table of the House. Let us start with the proceedings in the Rajya Sabha. The Rajya Sabha was on Monday adjourned over the opposition's protests over the JPC probe on the Adani Group controversy and the Treasury bench's demand for an apology by Rahul Gandhi for his speech in London. Chairman Jagdeep Dhankar adjourned the upper house within a minute of the start of the proceedings. The House stands adjourned till 2 p.m. today. When the House met after the first adjournment at 2 p.m., members from Congress and Aam Aadmi Party trooped into the well seeking a JPC probe into the Adani issue. Chairman Dhankar expressed his disappointment over the continuous disruptions in the House. He said 10 hours were allocated for discussion on the bills that could not take place. As the chaos continued, the chairman adjourned the House for the day. It is unfortunate that 10 hours that were given for discussion on this have not been availed. It is most unfortunate. This is a theatre for discussion, debate, to put across points that matter in larger public interest. Not availing these 10 hours of discussion is not very wholesome. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Tuesday, 28th March 2023. Parliament on Monday approved the Union Budget for 2023-24 with the Lok Sabha clearing the finance bill as amended by the Rajya Sabha amid continuous uproar. The Rajya Sabha cleared and returned many bills to the Lok Sabha as the opposition continued to raise slogans and protests. The upper house returned the Finance Bill 2023, the Appropriation Bills 2023 and Jammu and Kashmir Appropriation Bills 2023, the Jammu and Kashmir Appropriation Number 2 Bill, the Appropriation Number 2 Bill 2023 with a voice vote without discussion. The Budget Union Territory of Jammu and Kashmir 2023 General Discussion, Shri Pankaj Chaudhary. To move for consideration of Jammu and Kashmir Appropriation Number 2 Bill 2023, Jammu and Kashmir Appropriation Bill 2023, the Appropriation Number 2 Bill 2023, the Appropriation Bill 2023. Motion moved. The Budget Union Territory of Jammu and Kashmir 2023, the Jammu and Kashmir Appropriation Number 2 Bill 2023, the Jammu and Kashmir Appropriation Bill 2003, the Appropriation Number 2 Bill 2003, and the Appropriation Bill 2003 are now open for discussion. Shri Jawahar Sarkar, Shri Vaiko, Shri Pankaj Chaudhary, प्रस्ताव करता हूं कि वित्त वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की संस्कृति से कच्चा और राष्ट्रीय संसाधन के विनियोग को प्रदान करने वाले विधेयक को लोकसभा के द्वारा पारित में विचार किया जाए. I shall put the motion regarding consideration of the Jammu and Kashmir Appropriation Number 2 Bill 2023 to vote. The question is
that the Jammu and Kashmir Appropriation Number 2 Bill 2023 as passed by Lok Sabha shall be taken into consideration. Those in favor say aye. Those against say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Shri Pankaj Chaudhary to move that the bill be returned. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को लौटाया जाए। Motion moved. The bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor, please say aye. Those against, please say. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is returned. I shall now put the motion regarding consideration of Appropriation Bill 2023 to vote. The question is that the Appropriation Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion adopted. Shri Pankaj Chaudhary to move that the bill be returned. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को लौटाया जाए। Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes. The bill is returned. Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the Finance Bill 2023 and the House passed the resolution to return the Finance Bill to the Lok Sabha. The passage of the Finance Bill completes the budgetary exercise for 23-24. The Finance Bill 2023, Srimati Nirmala Sitharaman to move a motion for consideration of the Finance Bill 2023. Sir, I rise to move that the bill to give effect to the financial proposals of the central government for the financial year 23-24 as passed by the Lok Sabha to be taken into consideration. Motion moved. There are no members who wish to participate on this. Srimati Nirmala Sitharaman to reply to the discussion. Much is not said except that there will be an amendment, one amendment which I would want your indulgence to accommodate. The question is that Finance Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Clause 1, the enacting formula, the title, eastern part of the bill. Those in favor say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 1, the enacting formula and title adopted. Srimati Nirmala Sitharaman to move that the bill with recommendation with amendment be returned. So I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill with amendment recommended be returned. The question is that the bill with the amendment recommended be returned. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill with the amendment recommendation is returned. Time for a very short break in the bulletin. News from the lower house on the other side. Welcome back to the House Highlights. Let us now take a look at some key moments in the Lok Sabha. The Lok Sabha was adjourned within a minute of the start of the day's proceedings over protests. Congress MPs reached the well of the House and hurled papers at the chair. Lok Sabha Speaker Om Birla said that he wanted to run the House with decorum. He then adjourned the House till 4 p.m. मैं सदन गरिमा से चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। After the House resumed at 4 p.m., Rama Devi, who was in the chair, first informed that the Speaker had rejected all adjournment motions and then asked for important papers to be laid in the House. Important papers related to the Ministry of Statistics Program Implementation, Ministry of Corporate Affairs,
Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Culture, Ministry of Finance and Ministry of Education were laid on the table of the House. माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। माननीय चेयरपर्सन, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की आज की संशोधित सूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज श्री राव इंद्रजीत सिंह जी के नाम के आगे अंकित है। आपके अनुमति से सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से श्री अश्विनी कुमार चौबे के नाम के आगे अंकित दस्तावेज जो आज की संशोधित कार्यसूची लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे अंकित है, मैं आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के लिए। सभापति जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 5 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। 6 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, शिक्षा मंत्रालय। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 7 डॉक्टर सुभाष सरकार, शिक्षा मंत्रालय के लिए। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 डॉक्टर भागवत किशन राव, कड़ार, वित्त मंत्री। Honorable Speaker, Madam, with your permission, I rise to lay the papers mentioned against my name in serial number 8 in list of today's business. After laying off important papers, reports related to the committee on absence of members from the sittings of the House, the committee on papers laid on the table and the committee on welfare of other backward classes were kept on the table of the House. श्री राम शिरोमणि वर्मा सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 10वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करेंगे। महोदय, मैं आज के कार्यसूची पत्र में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के समक्ष यथासूचीबद्ध सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 10वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। 10वां श्री गिरीश चंद्र जी। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सामने तथा सूचीबद्ध सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति 2022-23 के 106 में से 117वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। राजेश वर्मा जी। माननीय सभापति महोदया, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर अपने नाम के सामने यथासूचीबद्ध अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 19वें प्रतिवेदन के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं। Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal then made a statement in the House related to 2 issues. सर्बानंद सोनेवाल जी। Respected Madam, with your kind permission, I rise to lay a statement in Hindi and English. Number 1, correcting the reply to start question number 57 given on 9th December 2022 regarding establishment of
National Institute of Medicinal Plant, and 2. Giving reason for delay in correcting the reply. The chair then asked members permitted to raise issues under Rule 377 to personally mention it on the table of the House. जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपना मामलों के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। In legislative business, the House considered and passed the Finance Bill 2023 with the amendments recommended by Rajya Sabha. माननीय मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि वित्त विधेयक 2023 में राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन पर विचार किया जाए। Madam, I rise to move that the amendments as recommended by the Rajya Sabha in the Finance Bill 2023 as passed by Lok Sabha be accepted. सभा द्वारा यथापारित वित्त विधेयक 2023 में राज्यसभा द्वारा सिफारिश की गई संशोधन संख्या पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे कृपया हाँ करें। जो सदस्य इसके विपक्ष में है कृपया ना करें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मैं अब राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखूंगी। प्रश्न यह है कि राज्यसभा द्वारा सिफारिश किया गया संशोधन संख्या 1 को स्वीकार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया हाँ करें। जो सदस्य इसके विरोध में है कृपया ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। सिफारिश किया गया संशोधन स्वीकार किया गया। माननीय मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करेंगे कि लोकसभा द्वारा यथापारित वित्त विधेयक 2023 में राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन को स्वीकृति किया जाए। Madam, I rise with your permission to present the bill as recommended by the Rajya Sabha, earlier passed by the Lok Sabha, be cleared. प्रश्न यह है कि लोकसभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा सिफारिश किया गया संशोधन स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें। जो सदस्य इसके विरोध में हैं वे कृपया ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा लोकसभा द्वारा यथापारित वित्त विधेयक 2023 में राज्यसभा द्वारा सिफारिश किया गया संशोधन सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। Amid din on the Rahul Gandhi and Adani issues, the House was then adjourned till 11 a.m. Tuesday. सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 28 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। That's all in House highlights for the day. For daily updates of the budget session, keep watching Sansad TV. Good night.